Wow, they're both really strong. Or equally weak. Hi guys, मेरा नाम है विवेक, चैनल का नाम है बीइंग सारंगी एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑन दिस चैनल. स्टेलमेट हुआ एट द एतिहाद ऑन संडे. बहुत ही बोरिंग गेम था ऑब्वियसली एंड ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस था नहीं ये गेम से, बट ऑब्वियसली वी हैवंट डन दैट वेल एट एतिहाद इन रिसेंट ईयर्स ऑब्वियसली, एंड अ ड्रॉ इज़ अ गुड रिजल्ट is what I would say. ज़्यादा कुछ बॉल नॉलेज या ज्ञान नहीं पेलूंगा. I'll just say what I observed in the game basically. Remember in 2021 when we lost 5-0 to City? People forget that Pep did the exact same thing with Arsenal, last year. They didn't exactly park the bus, but they chose to wait and then counter-attack using KDB almost like a shadow striker with Haaland up top, playing their usual high pressing position based game, and which was actually very effective. And Pep did it basically out of respect to the way जैसे Arsenal खेल रहा था last season, so which is exactly what Arteta did this time around, knowing that Etihad has been like a graveyard for us in the last, I don't know what, 6, 7, 8 odd years. So I would say it was wise and pragmatic basically, the approach which Arsenal had in the game. And I see this as a sign of maturity, guys. At the end of the day, you're going for a trophy, you're in the title race, 3-way title race to bol rahe hain abhi. A positive result at the Etihad is just a step in that direction. And if Arsenal don't win the league this year, it won't be because we only took 4 points off Liverpool and City, which is a very big feat in itself. अगर progress wise देखा जाए, 4 points of Liverpool this season and 4 points of City this season. And ये game is usually the kind of game जो हम लोग हारते हैं at this point of the season basically. April, March में हम लोग ऐसे crunch fixtures हिस्टोरिकली हम लोग हमेशा हारते हैं. सो इट्स अ डेफिनेट इम्प्रूवमेंट. बहुत प्रोग्रेस हुआ है. आई विल टेक इट डेफिनेटली. थैंक यू वेरी मच. इंटरेस्टिंग फैक्ट बाय द वे, द लास्ट टाइम जब सिटी ने बेसिकली फेल टू स्कोर एट द एतिहाद, पता है कब था वो? दैट वाज इन अक्टूबर 2021. ठीक है. इट्स बिन 57 गेम्स सिंस देन, which is a testament to the fact कि Arsenal has the best defense in the league definitely, and in one of the best defenses in Europe also मैं बोल सकता हूँ, है ना. हम लोग उनको पोजीशन दिए, ज़्यादा प्रेस हम लोग ने नहीं करा. एज अ सिटी फैन इट वुड हैव बीन वेरी फ्रस्ट्रेटिंग टू वॉच द गेम बेसिकली, आई वुड से, है ना, कंसिडरिंग द फैक्ट कि दे ओनली हैड लाइक व्हाट 1 शॉट ऑन टारगेट. अनदर पॉइंट आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज द रेफरिंग. एंथनी टेलर, जिसका मैं बहुत बड़ा फैन तो हूँ नहीं, एंथनी टेलर, ठीक है, बट ही डिड वेल यार. दोनों साइड्स के लिए ही वॉज लीनियंट. ज़्यादा कार्ड्स वगैरह नहीं दे रहा था. ऑल्दो द सिटी के प्लेयर्स वर क्राउडिंग द रेफरी एट ईच. हर एक टैकल के पीछे 2 लोग उसको पीछे भाग रहे थे कि नहीं, काट दो. सो व्हाट आई एम बेसिकली सेइंग इज कि द रेफरिंग वाज ऑन पॉइंट एंड इट वाज फार बेटर देन हैविंग अ रेफरी हु गिव्स फाउल्स टू ईजिली बेसिकली, है ना. एंड अगर 1 मैन शॉट होता आर्सेनल या फिर सिटी, तो गेम ऑब्वियसली वुड हैव टेकन अ डिफरेंट डायरेक्शन. तो थैंकफुली वो हुआ नहीं एंड इट वाज एन इवनली contested tie. Speaking of chances, Jesus के पास I think 2 अच्छे chances थे in the first half obviously, and उसने अच्छा नहीं कर पाया. One जो वो he had to take it the first time basically, and वो हल्का साइड से गया, and then one he was trying to cut back in, 2-3 डिफेंडर्स को बीट किया, बट वो eventually ब्लॉक हो गया. वो एक चांस था. ओडेगार्ड के पास एक अच्छा चांस था when he latched on to a free ball and he was clean through, but वो doesn't have the pace basically, and Martinelli था नहीं in the starting lineup. नहीं तो वो run लेता and he could have crossed it, squared it to him basically, but that could not happen unfortunately. And Raya had an absolute stinker यार. Raya and Saka from an Arsenal perspective मैं बोलूँगा. Raya was constantly giving balls away to the City players basically अपने kick से. Distribution was not on point. I think सबसे अगर disappointed अगर किसी में अगर मैं हूँगा फ्रॉम दिस गेम वुड बी राया एंड साका. स्पीकिंग ऑफ साका, तो जो डिबेट चल रहा है ना, साका वर्सेस फोडेन, तो फोडेन भी तो टट्टी खेला यार. वो कहाँ अच्छा खेला? वो सबड ऑफ बेसिकली अर्लियर देन साका, है ना. एंड हालैंड का भी गेम इतना अच्छा नहीं था, ऑल्दो ही हैड अ वेरी गुड बैटल विद गैब्रियल मगालिश. एंड व्हाट अ डिफेंडर यार गैबी, कम ऑन यार, थोड़ा रेस्पेक्ट डालो उसके नाम पे. इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स इन द लीग एंड इन वर्ल्ड फुटबॉल. मैं तो ये भी बोलूँगा कि टॉप 5 में आएगा गैबी, क्योंकि आई हैव सीन हिम प्ले वीक इन वीक आउट. आई नो व्हाट ही डज, एंड द पार्टनरशिप ही हैज़ फॉर्ज्ड विद सलीबा बेसिकली इज अनब्रेकेबल यार, है ना. क्या सॉलिड पार्टनरशिप है. एंड व्हेन डिड यू लास्ट हियर एन आर्सेनल फैन सेइंग कि भाई डिफेंस इतना सॉलिड है?
It's a welcome change, right? Big Gabby needs his flowers, man. Basically, the guy is a leader in this team. वो बहुत essential है अपने हम लोग के लिए. It's very essential. रॉय किन ने बोला हालैंड का परफॉर्मेंस इज इक्विवेलेंट टू अ लीग 2 टीम का स्ट्राइकर. तो उस पर आप जज कर सकते हो क्योंकि आज जो भी जज करने का है. एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट विच आई वांटेड टू हाईलाइट इज कि क्यों ये स्टेलमेट हुआ एंड व्हाई द मैच वाज सच अ बोरिंग स्पेक्टिकल ऑफ फुटबॉल एंड क्यों ऐसे हुआ एंड व्हाई दे वर इवनली मैच्ड इज बिकॉज बोथ टीम्स ना बोथ का कोचिंग स्टाइल ऑलमोस्ट सिमिलर है. ठीक है. एंड बोथ द टीम्स वर प्लेइंग विथ 4 सेंटर बैक्स बेसिकली. सिटी के 4 एंड इसके 4 आर्सेनल के, है ना. तो यू हैड 8 सेंटर बैक्स प्लेइंग इन दिस गेम. ठीक है. अगर 22 प्लेयर में से अगर 8 सेंटर बैक्स खेलेंगे तो स्टेलमेट तो होना ही है, बोरिंग तो होना ही है. फ्यू यूज सेंटर बैक्स ऑन योर इन योर वाइड पोजिशंस, वो लोग देखे अटैक करेंगे. ग्वार्डियोल, अकांजी एंड ग्वार्डियोल क्या खेल रहा था यार. ही वॉज वेरी सॉलिड. मतलब वो आर्सेनल प्लेयर्स को एक इंच भी नहीं दे रहा था. It was massive in that game, which is why you didn't see any ज़्यादा much creativity है ना in the game because of the ज़्यादा defensive minded players थे. And both teams basically set up almost in a similar fashion. हम लोग का राइस संभाल रहा था and they had Rodri and Kovacic वगैरह. So we should not be completely devastated या completely upset या फिर ज़्यादा भी खुश नहीं होना चाहिए. We have nullified City this season and we have nullified Liverpool also to some extent, जो कि basically are the 2 front runners in the league and front runners in world football basically. In the title race round robin, I would say we have been one of the best teams. Even if we don't quite do it this season, I think the difference between last season and this season is quite massive and you can see that in the performances and in the quality basically, है ना. And next year take Klopp out of the equation and who knows क्या होने वाला है, right? तो 9 games remaining. Next up we have Luton and उसके बाद Brighton before we face Bayern in the UCL. तो देखते ही देखते I think 9 games से 7 games हो जाएगा. ठीक है. Fixtures are coming in thick and fast. If you compare the remaining fixtures that City and Liverpool have with that of Arsenal, so I would say City have the easier fixtures. I think they don't have to face any top 4, top 5 teams. But on the other hand, Liverpool and Arsenal, they have a tough fixtures. जैसे कि we have Man U है, Spurs है, so we have to play these teams basically. I think same goes for Liverpool as well. So yeah, let's see. Fingers crossed, and we'll take it game by game. We have Luton up next, है ना. And मैं चाहूँगा कि थोड़ा रेस्ट मिले हम लोग के प्लेयर्स को. बेसिकली साका एंड ओडेगार्ड एंड राइस एंड सलीबा और गैबी, ये 4-5 प्लेयर्स. बेन वाइट में भी, बट इतना रोटेट तो आई डोंट थिंक मिकेल इज गोइंग टू डू दैट. तो दैट्स इट गाइस. मिलते हैं सून इन द नेक्स्ट एपिसोड. तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड कम ऑन यू गानर्स.